Hello everyone and welcome. Good evening friends. Welcome Divakar, Fatima, Kumar, Gaurav, Rutraj, Rahul, Pooja, Muktimir, everyone. Good evening and welcome. So this is the 9th lecture in the series. ये हमारी मेटाबॉलिज्म की जो स्पेसिफिक सीरीज़ है जिसको आप लोग अब तक एंजॉय कर रहे हैं, आप तक देखते चले आए हैं, उसका 9th लेक्चर है और हमने अब तक मेटाबॉलिज्म में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फंडामेंटल्स टू वेरिएशंस इन द मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म. आज हम कुछ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे आने वाली क्लास में भी, that how does metabolism vary in a specific disease conditions. जब कुछ diseases होती हैं तो उनमें मेटाबॉलिज्म कैसे वेरी करता है उनके बारे में हम बात करेंगे. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज़ बेसिकली मेटाबॉलिज्म इन कैंसर. कैंसर में मेटाबॉलिज्म किस तरह वेरी करता है, हाउ डज इट वेरी इन कैंसर, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. उसकी बात करेंगे. That might be very interesting, contemporary, as well as the topic of recent interest for researchers as well. So if you want to move into the cancer research, you must be aware about these things. आपको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में. And since we are having this series of metabolism, I thought it would be good enough to talk about metabolism in cancer. So my dear friends, this is the same thing. We will continue few things that you will not readily find in textbooks about metabolism and which are obscure, hidden. That was the theme of this metabolism series. हम उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे. जिन लोगों ने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैं उनको इंसिस्ट करूँगा कि आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करके सारे लेक्चर्स अगर देखेंगे तो आपको पूरी थीम समझ आएगी और पूरा जो कंटेंट है वो समझ आएगा. तो लेट अस स्टार्ट. आज शुरू करते हैं फिर कैंसर मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं. इफ़ यू आर गुड टू गो, everything is fine, if video audio quality is good, so I now open the session and start discussing about metabolism of cancer. What do you say? Should we start? Is everyone set to learn for next 1 hour? All right, so we can start now. Now the first thing that you need to understand is cancer is not a new disease. It's a century-old disease, and we know what we know about cancer is that first thing, it is uncontrolled proliferation of cells. So today we understand cancer as dysregulation of cell cycle. सेल साइकिल जो है वो डिसरेगुलेट हो जाता है एंड सेल्स लूज द कंट्रोल ओवर देयर डिवीजन. वो अपना कंट्रोल खो देती हैं सेल्स को लिमिट करने के लिए, उनका नंबर लिमिट करने के लिए. देयरफॉर अ स्मॉल टिश्यू और अ स्मॉल सेल कीप्स ऑन proliferating and increasing its volume of the tissue which we call tumor, and eventually that tumor may sometimes move to another place which we call as metastasis. The things may move to other place and they might cancer at other places. There are a lot of challenges in cancer treatment. बहुत सारे challenges हैं cancer treatment में. Of course, it is curable in some cases, curable भी है, but it becomes incurable and the finding suitable drug is very very difficult because as it is controlled by fundamental genes, fundamental factors which control cell cycle. So if you give a drug that will also have ill effects, उसके ill effects भी होंगे, harms भी होंगे, क्योंकि वो normal cells को भी affect करेंगी वो सारी दवाइयाँ. So chemotherapy, radiation, all the therapies which are proposed for cancer are generally harmful to the normal cells as well. That is one challenge. But if you look at the cancer not from the angle of molecular biology, if you look at the cancer from angle of biochemistry, अगर आप बायोकेमिस्ट्री की नज़र से कैंसर को देखें, so it is a very well organized metabolically rearranged system. ये metabolic shift होती है इसमें और metabolic rearrangement होता है because of several reasons.
one of the reason why metabolic rearrangement takes place is that the number of cells in a confined space increases. कैंसर में क्या होता है कि one cell grows spontaneously and it gives rise to very large number of cells, बहुत सारी cells बन जाती है, and there is uncontrolled division, cell का uncontrolled division होने लगता है, that leads to a few things like growth के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए मेटाबॉलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से. फर्स्ट थिंग इज you require various metabolites. आपको मेटाबोलाइट्स चाहिए बहुत सारे, उनका सिंथेसिस होना चाहिए. सो वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ एनाबॉलिज्म, बहुत सारी एनाबॉलिक रिएक्शंस करनी पड़ेंगी. एवरी टाइम अ सेल डिवाइड इट नीड्स टू मेक अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स, इट नीड्स टू मेक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल. सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ मेटाबॉलिक डिमांड विच इज़ मच मोर देन नॉर्मल सेल्स. नॉर्मल सेल से ज़्यादा मेटाबॉलिक नीड होती है इसकी. सेकेंड थिंग इज एज द सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग, जैसे जैसे सेल्स डिवाइड होती रहती हैं, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर ऑक्सीजन टू रीच इन ऑल द सेल्स. ऑक्सीजन जो है हर जगह नहीं पहुंच पाती है, एंड दैट लीड्स टू हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट. आई नॉट से एनॉक्सिक, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं पहुंचती है. The cancer cells have alternate arrangements, like they increase angiogenesis. कैंसर में angiogenesis भी होती है, that promotes the flow of oxygen, promotes the flow of blood to that areas, and that fulfills the demand of oxygen. But core part of the cancer is generally hypoxic, and that leads to an impairment or hypoxic signaling. हाइपोक्सिक सिग्नलिंग होती है कैंसर में. तो दो चीज़ें आपने देखी, एक एनाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होना चाहिए. देर आर डिफरेंट मेटाबोलाइट्स विच आर रिक्वायर्ड, सो एनाबॉलिक पाथवेज आर फेवर्ड इन कैंसर. सेकेंड थिंग, हाइपोक्सिक सिग्नलिंग ऑल्सो हैपन्स विच कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म, वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है. और तीसरी चीज़, किसी भी सेल को सर्वाइव होने के लिए एनर्जी भी चाहिए. इट ऑल्सो नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी चाहिए, राइट? क्योंकि उनको ग्रो करना है, उनको मेटाबॉलिज्म करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, एनाबॉलिक पाथवे करने के लिए भी एनर्जी चाहिए. सो इट नीड्स टू सिंथेसाइज अ लॉट ऑफ एनर्जी करेंसीज, एनर्जी मॉलिक्यूल्स. सो द प्राइमरी सोर्स दैट यू नो ऑलरेडी, अब तक जो मेटाबॉलिज्म हमने डिस्कस किया है, आप जानते हैं कि ग्लूकोज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. सो दीज सेल्स टेक अ लॉट ऑफ ग्लूकोज, बहुत सारा ग्लूकोज कंज्यूम करती हैं, राइट? So they are fond of glucose, sweet lover. Okay, cancer cells are sweet lover, glucose lover. उनको बहुत glucose चाहिए, right? And in order to have that glucose, they have additional mechanisms. Glucose के transporter ज़्यादा express करते हैं, so ज़्यादा से ज़्यादा glucose इनके अंदर आता रहता है. And that is one of the reason why you have a technique called PET imaging, positron emission tomography, where you have fluorinated glucose, fluorinated deoxyglucose, जिसमें से आप positrons emit कर सकते हैं. They are given as a oral dose or by injection, and then wherever that cancer tissue will be there, that takes up lot of this glucose which is fluorinated, and that emits positrons which can be detected by imaging system, and cancer tissues can be identified. So it's only by virtue of high consumption of glucose, क्योंकि glucose ज़्यादा consume होता है, cancer cell में उनका concentration ज़्यादा होता है, इसलिए आप cancer cells या cancer tissues या tumors की diagnosis भी कर सकते हैं. So these are three factors that we will discuss. Anabolism बढ़ जाता है, hypoxic signaling बढ़ जाती है, और एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है. ये तीन चीज़ें हैं जो कैंसर को मेटाबॉलिज्म के एंगल से, अगर बायोकेमिस्ट्री के एंगल से आप देखेंगे तो आपको नजर आएंगी. लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन, एक एक करके हम उनकी बात करते हैं. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द केस ऑफ एनर्जी जनरेशन. पहले हम एनर्जी जनरेशन की बात करते हैं. एट द सेम टाइम वी विल ऑल्सो लुक एट दिस फैक्टर. हम एनाबॉलिज्म फैक्टर की बात भी करेंगे, हाउ दैट एनाबॉलिक फैक्टर इज इन्फ्लुएंस्ड. So you know what happens in the normal cells. अगर हम normal cell की बात करें,
तो नॉर्मल सेल में क्या होता है यूजुअली, यू हैव ग्लूकोज विच एक्ट एज प्राइमरी एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है ग्लूकोज. दैट ग्लूकोज टर्न्स इनटू pyruvate by set of 10 reactions which we call glycolysis, right? And pyruvate then eventually enters mitochondria. Mitochondria में चला जाता है pyruvate, and there it forms acetyl coenzyme A, which undergoes a cycle of reactions called TCA cycle, and it generates reducing equivalents like NADH, FADH, GTP. Whereas this NADH and FADH can go into electron transport chain and it can generate a lot of ATP. बहुत सारा ATP बनता है, right? In fact, glycolysis also has substrate level ATP production. Glycolysis से भी substrate level पर ATP production होता है, right? But when you talk about cancer cells, अगर आप cancer cells की बात करें, so what is the difference that occurs in the cancer cells? The first thing is that they do not completely rely on the catabolic cascade. हालांकि यहाँ पर anabolic pathways होते हैं. I told you the other day junction points of metabolic pathways, जहाँ आपने देखा था glucose 6 phosphate जो है वो बाकी चीज़ों में convert होता है. It makes amino acids, it makes other things like glycogen and lot of other things. So as cancer cells have the requirement of anabolic pathways, तो यहाँ पर glucose doesn't only convert in pyruvate and doesn't only enter into mitochondria to give acetyl coenzyme A and go TCA cycle, ETC to make energy, but there are a lot of other things that happen simultaneously. The first thing that is different in these cells is a high flux or high deviation of these things into amino acid biosynthesis. You have glucose 6 phosphate entering into amino acid biosynthesis. Even this can make serine, even PEP can enter into various pathways. Apart from this, you know that glucose 6 phosphate can also make ribose sugars, which can eventually give rise to nucleotides. So although this pathway will be happening in the normal cells at the threshold level, but this pathway is much more activated or elevated in the cancer cells. Cancer cells में ये elevate हो जाता है. यहाँ भी ribose बन रहा है, यहाँ भी nucleotides बन रहे हैं, लेकिन they are at the substantially low rate. But in cancer cells, since they have to divide, they need to make more nucleic acid in the given time. They have to make more nucleotides. So lot of glucose will be deviated to this pathway. यहाँ चला जाएगा. This will also go into the pathways like amino acid biosynthesis. Apart from that, अगर ऐसा होगा तो अब जो TCA cycle है इसको चीज़ें मिलना कम हो जाएंगी, पायरुवेट मिलना कम हो जाएगा, इसको एसिटाइल कोएंजाइम में कम हो जाएगा. So this takes up glutamine as a potential source of alpha ketoglutarate. क्योंकि ग्लूटामीन से अमोनिया निकल जाता है तो ये ग्लूटामेट बनेगा, और एक अमोनिया निकल जाएगा तो अल्फा केजी बन जाएगा, राइट. सो यू कैन हैव TCA cycle primarily running from glutamine. ग्लूटामीन उसको फीड करता है. एसिटाइल कोएंजाइम में भी बनता है, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम में जो है वो सिट्रेट बनकर उसका कुछ पार्ट बाहर निकल जाता है. सो सिट्रेट कम्स आउट एंड दैट इवेंचुअली गिव्स राइज टू फैटी एसिड्स. सो व्हाट यू सी हियर, आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि कैंसर सेल्स में एनाबोलिक पाथवेज ज़्यादा फोर्सफुली किए जा रहे हैं.
because it require anabolism, right? It require many things to be synthesized. उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, कैंसर सेल्स को जो है एनाबॉलिक रिएक्शंस ज़्यादा अमाउंट में चाहिए. तो न्यूक्लियोटाइड का बायोसिंथेसिस बाय राइबोज, लॉट ऑफ अमीनो एसिड्स बिकॉज प्रोटीन्स नीड टू बी सिंथेसाइज्ड, दे आर सिंथेसाइज्ड. ग्लूटामीन दैट फीड्स TCA साइकिल. तो ये वाली जो आर्म है इसकी TCA साइकिल की, ये स्ट्रांग हो जाती है, right? That happens in cancer. And also fatty acid synthesis is elevated. So these are some of the differences that can be contrasted between a normal cell and a cancer cell in terms of the anabolic reactions. Okay? तो एक बात आपको समझ आई कि कैंसर सेल्स में anabolic reactions ज़्यादा होती हैं. It favors more anabolism compared to the normal cells, and the reason is very clear. बहुत ही clear reason है. It needs to synthesize parts of the cell, it needs to divide cells in larger quantities in a faster manner, इसलिए वहाँ पर ये शिफ्ट होती है, राइट? इतनी बात क्लियर है सभी को? ओके, so I'll come to that lactate point. Just give me a moment. I'm going to discuss that. Entire lecture will be on the lactate production, so don't worry about that. So this was about the first point, that is anabolism is favored. Anabolism जो है वो फेवर होता है, ये कैंसर के बारे में एक important बात है. Now the second most important thing, दूसरी एक important चीज़ जो early days में यानी कि 1920s के आसपास डेवलप की गई थी. In fact there was a paper in 1923 by a German scientist Otto Warburg. That appeared to be a very, very classical paper and a very interesting paper and a very interesting work which given or assigned metabolism as a cause for cancer. कैंसर मेटाबॉलिक डिसरेगुलेशन की वजह से, मेटाबॉलिक रिट्यूनिंग की वजह से होता है, ये हाइपोथेसिस दी थी ऑटो वार्बर्ग ने, एंड दैट वाज फेमस, दैट बिकेम पॉपुलर एज वार्बर्ग हाइपोथेसिस. आई विल कम टू दिस इन अ मिनट, बट लेट मी जस्ट टेल यू एट द सेम टाइम almost there was another scientist called Herbert Crabtree. He explained a phenomena. इन्होंने एक phenomena explain की. What he did, he studied yeast. So normally you know that this glucose to pyruvate metabolism happens everywhere. सारी cells में ये phenomena होता है, glucose to pyruvate. This is glycolysis. And then it can either go into oxidative cycle. अगर ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीडेटिव साइकिल में चला जाता है. If there is no oxygen, अगर ऑक्सीजन नहीं है, then it can go into different route which we call as fermentation, and it can give rise to ethanol, right? So we call that as anaerobic glycolysis. उसको हम क्या बोलते हैं? anaerobic glycolysis बोलते हैं. And if it is not yeast, अगर yeast की बात ना करें हम muscles की बात करें higher organisms में, तो muscle में भी ये phenomena होता है. But there in absence of oxygen, अगर ऑक्सीजन नहीं होती है, उस टाइम क्या बनता है? lactate बन जाता है. Alright, this we have already discussed. Why lactate is formed, that we have already discussed in the previous sessions. So this is what happens mostly in anaerobic conditions. मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है. जब ऑक्सीजन खत्म हो गई है, anaerobic situation है, threshold level से नीचे चली गई ऑक्सीजन, in that situation we do not flush this pyruvate into TCA cycle or oxidative phosphorylation, but we flush this as lactate, which we can call as a lactate fermentation or anaerobic glycolysis, or in organisms like yeast it can turn into ethanol. In fact जो प्लांट में फ्रूट्स होते हैं, जब वो पेड़ से नीचे गिर जाते हैं तो उनमें भी क्या होता है, जो शुगर होती है दैट इज इवेंचुअली फर्मेंटेड इनटू इथेनॉल. देयर मे बी वन पॉसिबल इवोल्यूशनरी रीजन, क्योंकि इथेनॉल एंटीसेप्टिक है तो उनको सर्वाइव करने का एक मैकेनिज्म भी हो सकता है. दैट कैन बी वन रीजन व्हाई द ग्लूकोज इज टर्न्ड इनटू इथेनॉल. लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी, क्रैबट्री को क्या एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना देखने को मिला, दैट दिस डजंट ओनली हैपन इन एनारोबिक कंडीशन. ये चीज़ ऐसा नहीं है सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में ही होगी. ही परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट वेयर ही एलिवेटेड ग्लूकोज. अगर ग्लूकोज को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ईस्ट के कल्चर में डाल दिया जाए, इफ दे एलिवेटेड ग्लूकोज, देन दे ऑल्सो फाउंड
that rather than going into TCA cycle, this is flushed into ethanol fermentation. ज़्यादा ग्लूकोज होने पर भी वो इथेनॉल फर्मेंटेशन में भी जा सकता है, even in presence of oxygen, and he noticed that there can be aerobic glycolysis, okay, which can turn into ethanol production. यानी कि एरोबिक सिचुएशंस में भी इथेनॉल का प्रोडक्शन हो सकता है, विच वॉज अदरवाइज नॉट नोन, जो पहले से नोन नहीं था. दिस बिकेम पॉपुलर एज क्रैबट्री इफेक्ट. इसको क्या कहा गया? क्रैबट्री इफेक्ट कहा गया. ऑलराइट, सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज क्रैबट्री इफेक्ट. क्रैबट्री इफेक्ट इज समथिंग which is associated with the production or anaerobic situation, anaerobic pathway of glycolysis, even when oxygen is aerobic pathway of glycolysis turning like anaerobic, even when oxygen is present, it is making ethanol. So he stated that environmental factors, surrounding factors, not only oxygen but other things, other metabolites can influence the fate of glucose. Glucose का fate affect कर सकते हैं. Similar finding was observed by Otto Warburg. He also observed that cancer cells can undergo aerobic fermentation, or they can undergo aerobic glycolysis, where glucose can be converted to pyruvate, and pyruvate, rather than going into TCA cycle, it goes into lactate production. So cancer cells produce a lot of lactate. बहुत lactate produce करते हैं cancer cells. I'll talk about the benefits of that. So that is something which was observed by Otto Warburg. And his whole hypothesis gave a claim that cancers might arise due to this metabolic dysregulation. ये जो मेटाबॉलिक डिसरेगुलेशन है, एरोबिक स्विचिंग है जो ग्लाइकोलिसिस की फ्रॉम TCA साइकिल, फ्रॉम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टू लैक्टेट प्रोडक्शन और फर्मेंटेशन, that was a common phenomena or a cause of cancer which was considered in early days, and this resulted in Nobel Prize to this person in 1931. He got 1931 Nobel Prize for Physiology and Medicine. That was such an interesting discovery. But the Warburg effect, it became very, very popular. Unfortunately, that this started a series of lot of questions. इस Warburg effect के बाद हजारों questions आ गए सामने कि आखिर कैंसर सेल्स क्यों लैक्टेट प्रोड्यूस करती हैं. कैंसर सेल्स TCA साइकिल को प्रेफर ना करके ग्लाइकोलिसिस को क्यों प्रेफर करती हैं. That was very inquisitive and very, very important question which need to be answered. So somehow Warburg himself, he proposed that there might be some defects in mitochondria. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिफेक्ट हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव हो सकती हैं, शायद उसकी वजह से इसको स्विच करना पड़ता है लैक्टेट मेटाबॉलिज्म की तरफ, क्योंकि एनर्जी डिमांड तो इसकी है ही ज़्यादा, एनर्जी तो इसको चाहिए ज़्यादा. So it might be switching towards glycolysis. And his experiments were valid. He stopped giving glucose to the cells. He stopped, he stopped the glycolysis and used the inhibitors of glycolysis, and he found that cancer cells were completely demolished. उनकी death हो गई. So this was very, very important for cancers. Now, can you answer? इस बात को करीब 100 साल हो चुके हैं. It has been almost like 100 years. Maybe the next year, next to next year, we will mark the century of Warburg effect. So what you people believe, अगर आप मेटाबॉलिज्म के बारे में जानते हैं, आप अगर कैंसर के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्यों कैंसर में ग्लूकोज से लैक्टेट बनता होगा, क्यों कैंसर सेल्स ग्लाइकोलिसिस को प्रेफर करती होंगी. This theory proved to be wrong, that cancer cells have defective mitochondria. This is not a right hypothesis. We know that cancer cells have functional mitochondria. So can anyone point me out this very interesting question? इस बात का कोई आंसर मुझे दे सकता है कि कैंसर सेल्स क्यों लैक्टेट फर्मेंटेशन फॉलो करती हैं, why they make lactate, why they depend on glycolysis alone even when the oxygen is present, why there is oxygen
aerobic glycolysis. And this whole thing is called as, इस पूरी चीज को हम कहते हैं Warburg effect. Anyone please, can you answer that? Good evening to the people who have joined late. I'm looking for an answer from you. मैं एक आंसर ढूंढना चाह रहा हूँ, आपसे एक आंसर जानना चाह रहा हूँ. अगर आप कैंसर के बारे में ये जानते हैं कि वो मेनली ग्लूकोज यूज करता है, लॉट ऑफ ग्लूकोज, जो मैं बता चुका हूँ, इट इज अ ग्लूकोज एडिक्ट. सो it doesn't convert this glucose into CO2 and water by taking this to TCA cycle. Rather, it flushes lot of glucose to pyruvate and then to lactate, which we call as Warburg effect. Why this is seen in cancer cells? What may be the underlying cause? क्या reason हो सकता है इसका? Can you tell me that? Anyone please. इतना interesting question आपको और नहीं मिलेगा कैंसर की बायोकेमिस्ट्री में. Okay, so I'm getting one answer. To release ATP from mitochondria itself require energy expenditure. No, that's not a perfect answer. ATP released from mitochondria doesn't require energy. It is an energy generating process, you know that already. One person has answered the cancer cells intake more amount of glucose, so it must be showing Crabtree effect. That might be possible. It might be similar to that. उसकी तरह ही होगा. बट उसकी ज़रूरत क्या है? क्यों उसको ज़रूरत पड़ी बहुत सारा ग्लूकोज लेने की? फिर क्यों ज़रूरत पड़ी उसको TCA साइकिल की? इनफैक्ट एक बात तो आप जानते हैं ना कि TCA साइकिल अगर वो करेगा, कोई पाथवे TCA साइकिल के थ्रू ग्लूकोज मेटाबोलाइज होगा, इट मेक्स मोर ATPs. ग्लाइकोलिसिस के थ्रू कम ATP बनते हैं, राइट? दिस यू ऑलरेडी नो. So why not? If energy requirement is high, एनर्जी की अगर ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो क्यों नहीं TCA साइकिल हो जाता है? Why it goes in less energy producing pathway? I'll be very happy if anybody can answer that question. Very happy. And if not, by the end of this video you will have that answer, and I think you will be very lucky people who will get answer to this question at this graduate level or postgraduate level. And you should actually have answer to this question when you are studying about cancer metabolism. So let me know the answer please. No, I am not getting a satisfactory answer because it needs to divide more in less time. So what? It requires more energy. ज़्यादा एनर्जी तो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मिल रही है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से मिल रही है. ग्लाइकोलिसिस से थोड़े ना ज़्यादा एनर्जी मिल रही है. ज़्यादा एनर्जी चाहिए सेल्स को तो फिर उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करना चाहिए. वो लैक्टेट प्रोडक्शन क्यों करेगी? No one has given the right answer yet. I don't have the correct answer yet. Think about it. सोचिए. नहीं सोच पा रहे. Let me answer this. मैं आंसर करता हूँ. So if you look the time efficiency, the most interesting thing, that's what I tell you always. मैं हमेशा शुरू से आपको बता रहा हूँ कि मेटाबॉलिज्म को वैसे मत पढ़ो जैसे आपको आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, वैसे मत पढ़ो जैसा बुक्स में दिया रहता है. मेटाबॉलिज्म एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट नेटवर्क है. You don't have to look at it as a static picture. उसको एक फोटोग्राफ की तरह मत देखिए कि ग्लाइकोलिसिस में 10 रिएक्शन है, याद कर लिया ग्लाइकोलिसिस हो गया. No. If you look at the pace or flux of glycolysis, अगर आप ये जानने की कोशिश करें कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो सिर्फ 2 ATP बना रहा है, नेट ATP, बट TCA cycle altogether is giving you 30 ATPs, or one cycle is giving you like 10 ATPs, 2 cycle per glucose are giving you 20 ATPs. That seems to be more efficient, but on the time scale, glycolysis is much rapid. Glycolysis जो है, that is faster. Is 10 to 100 times faster. Something very interesting. तो अगर एक गिवन टाइम में TCA साइकिल से आप एनर्जी जनरेट कर रहे हो, लेट्स से वो 30 ATPs है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस से आप केवल 2 ही ATP जनरेट कर रहे हैं,
So compared to glycolysis, if end product is lactate, you are actually generating 15 times more ATP in TCA cycle. But as I have told you that it is 100 times faster. So 15 times TCA cycle faster है, लेकिन 100 times तो टाइम स्केल पे ग्लाइकोलिसिस फास्टर है. जितने टाइम में TCA साइकिल 30 ATP बनाएगा, उतनी देर में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस अगर होगा, अगर TCA साइकिल नहीं हो रहा है, it can make 100 ATPs. So which is larger, 30 ATPs or 100 ATPs? So why should not cancer cells prefer this? उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जल्दी जल्दी डिवाइड होना है. Why don't they prefer glycolysis? उनको लगता है that's better. That's one plausible explanation, right? So the challenge is Warburg effect is very well known. 100 साल हो चुके हैं Warburg effect को. लेकिन Warburg effect क्यों होता है, इस बात की जानकारी अभी भी एक्सप्लोर हो रही है. जो मैंने आपको एक रीजन बताया, that's one possible reason, but not the entire explanation of Warburg effect. That's one possible justified reason. The second reason is you need to conserve carbon-carbon bonds. If you take a metabolite, if you take glucose, if you break all the carbon-carbon bonds, you split that glucose into carbon dioxide and water entirely, that's going to diminish, right? All the bonds are going to diminish, it's going to be destroyed. Carbon dioxide will be eliminated out and exhaled out from the body, water will be utilized somewhere. So you're not conserving that bond energy which can be utilized for anabolic reactions. Since apart from producing energy, you also need anabolic reactions. आपको anabolic reactions भी चाहिए, आपको बहुत सारे metabolites भी बनाने हैं. So why not to preserve this bond energy? Right? On a time scale, glycolysis seems to be more effective. At the same time, glycolysis is much rapid than TCA cycle. It can generate more energy per unit time. So it is also conserving the carbon-carbon bonds. That is yet another plausible reason for explaining the Warburg effect. All right, did that answer the question? जो मैंने आपसे पूछा था, क्या आपको उसका आंसर satisfactory आंसर मिल रहा है? Then third thing, lactate is not a waste. Many people believe that lactate is a waste. That's a myth. Lactate has got a lot of things to do. Lactate बहुत सारी चीज़ें करता है. In fact, the lactate that is produced from a cancer cell, एक cancer cell से जो lactate produce होता है, that is most often expelled out from the cancer cell and it creates a local microenvironment. ये कैंसर सेल में लोकल माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है. डू यू नो व्हाट इट डज? इट रिड्यूसेस द पीएच. इसके नियर बाय एरिया का पीएच बहुत कम हो जाता है एंड सिंस द पीएच डिक्रीजेस इट हैज लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस. इसके कई फायदे होते हैं कैंसर सेल्स को. क्या फायदे होते हैं? कैंसर सेल के आसपास के एरिया में अगर पीएच कम हो जाता है, इट कैन इवेड इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम का जो मैकेनिज्म है उसको ये इवेड कर सकता है, उससे बच सकता है. बाहर से जाने वाली ड्रग्स बिकम लेस इफेक्टिव, राइट? एंड समटाइम्स व्हेनेवर नीडेड इट कैन रीयूटिलाइज दिस ग्लूकोज lactate, इसको भी यूटिलाइज कर सकता है एज एनर्जी सोर्स. सो ड्यू टू दीज एडवांटेजेस कैंसर सेल्स जनरेट अ लॉट ऑफ लैक्टेट. बहुत सारा लैक्टेट प्रोड्यूस करती हैं एंड दैट लॉट ऑफ लैक्टेट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द रीजन्स विच आर सराउंडिंग द कैंसर सेल्स. कैंसर सेल के चारों तरफ जो एरिया होता है उसमें ये अरेंज रहते हैं. तो क्या आपको एक जस्टिफाइड आंसर मिला इस बात का कि वारबर्ग इफेक्ट क्यों होता है, कैंसर सेल्स क्यों ग्लूकोज को लैक्टेट में बदलती हैं, क्यों वो टीसीए साइकिल को प्रेफर नहीं करती हैं? इज दैट अ सेटिस्फैक्टरी आंसर? बट आई विल से दिस इज नॉट द ओनली आंसर. पीपल आर स्टिल एक्सप्लोरिंग बिकॉज वारबर्ग इफेक्ट is also seen in non-cancerous cells. Warburg effect is also seen in the cells which are unicellular. It is also seen in the isolated cultured cells like SIHA cells.
Why so? We don't have answers yet. अभी हमारे पास इन चीज़ों के आंसर्स नहीं है. तो ये जो हाइपोथेसिस है, वार्बर्ग हाइपोथेसिस, दिस इज स्टिल नॉट कंप्लीटली आंसर्ड 100 साल बाद भी, राइट? सो दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग. ये इंटरेस्टिंग चीज़ है. नाउ लेट मी टेक यू टू समथिंग more interesting, Warburg effect से ही related. These are the few things that happen in Warburg effect. You have glucose getting converted to pyruvate, making lactate instead of going into TCA cycle. There are few implications of the Warburg effect, that yes, lactate production that leads to tumor microenvironment creation because lactate gets accumulated over there, there is decreased pH. So that enhances the disruption of tissue architecture. जो टिश्यू का बेसिक आर्किटेक्चर है उसको डिस्ट्रॉय करके एक बड़ा ट्यूमर बन सके, कैंसर को फेवर करती है ये चीज़. Another thing is rapid ATP production. As I told you, why it is rapid, because glycolysis is faster. Then it also promotes biosynthesis because carbon-carbon bonds are preserved, and lot of intermediates of this pathway can be utilized in anabolism. Anabolism में use हो सकते हैं. And of course this can impact the cell signaling. ये जो माइक्रो एनवायरनमेंट है, यहाँ पर बहुत सारे हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट भी है साथ में, और बहुत सारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी जनरेट होते हैं. दे गिव राइज टू स्पेशल टाइप ऑफ सिग्नलिंग इन कैंसर सेल्स विच इज कॉल्ड एज रॉस और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज सिग्नलिंग. So that's something which happens in cancer cells. But despite these impacts, there are some questions which are still unanswered. कई क्वेश्चन है जो अभी तक आंसर नहीं हुए, like why ATP is limiting for proliferation. ATP के लिए ATP जो है वो proliferation के लिए लिमिटिंग फैक्टर क्यों नहीं है? अगर ये करेक्ट मैकेनिज्म है तो ATP ही लिमिटिंग फैक्टर होना चाहिए था. बायोसिंथेसिस अगर होती है तो why most of the glutamine is not retained. ज़्यादातर ग्लूटामीन जो है वो रिटेन क्यों नहीं होता है? दिस इज अनदर क्वेश्चन. हियर इफ द सेल सिग्नलिंग इज देयर, सो व्हाई देयर इज अ स्पेसिफिसिटी दैट इज अनक्लियर. कि कैंसर सेल में ही ये वाली सिग्नलिंग ज़्यादा क्यों होती है, इस बात का आंसर नहीं है. और अगर ये जो ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट है ये डिसरप्शन ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर करता है, सो व्हाई यूनिसेलुलर एंड कल्चर्ड सेल्स दे ऑल्सो हैव एरोबिक ग्लाइकोलिसिस. सो एज आई टोल्ड यू, मैनी क्वेश्चंस आर अनआंसर्ड. अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस कैंसर मेटाबॉलिज्म के बारे में, वार्बर्ग इफेक्ट के बारे में अनआंसर्ड है. सो वी हैव सीन द क्रैबट्री इफेक्ट, we have seen Warburg effect. Crabtree effect was not associated with cancer, but it was related to the fermentation in yeast, where Herbert Crabtree, he stated that there must be some other factors other than oxygen which are controlling the metabolism of glucose, and since he added glucose, high glucose concentration diverted the metabolism towards lactate or towards ethanol production, but not towards oxidative fermentation. That was then observed in the cancer cells by Otto Warburg, and that became popular as Warburg effect. So I hope Warburg effect और Crabtree effect आपको क्लियर होगा. इतनी दो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी. अगर ये क्लियर है, let's talk little more. There is something which is called as anti-Warburg effect. So can anyone tell me what is anti-Warburg effect? ये क्या होता होगा? क्या वार्बर्ग इफेक्ट होता है और ग्लाइकोलिसिस जो है ज़्यादा होती है, इसका मतलब हम ये समझें कि TCA साइकिल बिल्कुल नहीं होता है? Should we understand that? No, my dear friends. Recent research, it has also found that it is not only glycolysis which is upregulated and TCA cycle downregulated, but apart from glycolysis, TCA cycle is also upregulated. ये भी अभी नई findings आई हैं. So we are in a state of dilemma still. हम एक dilemma की state में है कि होता क्या है exactly cancer में, in which direction the metabolism is going. There is something which is also interesting that happens in cancer, which have been recently proposed, that is called as anti-Warburg effect. So what you know about cancer by now, अब तक आप कैंसर के बारे में क्या जानते हैं, that cancer cells, they take up glucose, there are glucose transporters which they express, they take up lot of glucose from there, बहुत सारा glucose वो infuse करते हैं अंदर, that glucose goes inside and that turns into pyruvate, pyruvate makes lactate,
and that lactate eventually goes out, बाहर चला जाता है by specific type of transporters that are called as MCT, monocarboxylate transporters, right? So there are monocarboxylate transporters which exit this lactate out, and this lactate gets accumulated in the microenvironment of cancer. Right? This you already know. So these are primarily glycolytic cancer cells. ये कैसी cancer cell है? Glycolytic cancer cells. Now it has been observed, ये देखा गया है कि कैंसर के माइक्रो एनवायरनमेंट में जो ट्यूमर होता है, that is not only having these one type of glycolytic cancer cells, but it also have some other cells. और भी cells होती हैं इसमें. They are called as CAF, cancer associated fibroblasts. Okay, so it also attracts a lot of cancer associated fibroblast. Cancer tissue में cancer associated fibroblast भी आ जाती हैं, and they also have the similar kind of mechanism. इनमें भी वैसा ही mechanism होता है. They take up glucose, इनमें भी glucose जाता है, and they also make pyruvate, they also make lactate, and that lactate can eventually come out. ये जो lactate है ये इन cells से भी बाहर आ सकता है through that MCT transporter. So not only cancer cells, not only rapidly proliferating cancer cells, they make lactate, they undergo this kind of cycle, but also cancer associated fibroblasts, they start making lactate. तो ज़रूरत पड़ने पर cancer cells जो glycolytic थी उनमें से कुछ cancer cells oxidative भी हो जाती हैं. So you may not always have glycolytic cancer cells. You can also have oxidative cancer cells, and that's the area of recent research. People are looking at microenvironment of cancer rather than looking at the single cells or the trivial conventional mechanisms. The microenvironment as a whole is important because metabolism here is different, metabolism here is different. When you look at oxidative cancer cells, अगर आप oxidative cancer cells को देखेंगे, so what they can do is, rather than secreting lactate, lactate secrete करने के बजाय they take up the lactate. वो यहाँ से जो बाहर का एरिया है, जो माइक्रो एनवायरनमेंट है, यहाँ से वो lactate consume कर लेते हैं. They take up lactate, right? And what they do with this lactate, you know, lactate can enter into mitochondria, that can also enter into mitochondria, and lactate can turn into pyruvate, ये pyruvate बना सकता है, and this can then turn into acetyl coenzyme A and undergo TCA cycle to generate energy. Get confused? अभी तो हमने बात की थी कि वार्बर्ग इफेक्ट होता है, अभी तो हमने बात की थी कि लैक्टेट होता है, उसकी 10 बेनिफिट्स हमने गिने थे, लेकिन हमें अभी पता चला कि कैंसर सेल्स में सिर्फ वार्बर्ग इफेक्ट नहीं होता है. कैंसर का जो पूरा एनवायरनमेंट है उसमें कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जो एंटी वार्बर्ग इफेक्ट शो करती हैं. दैट मीन्स रादर देन प्रोड्यूसिंग लैक्टेट दे डिपेंड ऑन लैक्टेट, वो लैक्टेट को कंज्यूम करती हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं. अमेजिंग. इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड, धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है. सो दैट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैंसर, हाउ इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड. सो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंटी वार्बर्ग इफेक्ट? Instead of releasing lactate, instead of using glucose to give rise to lactate and doing glycolytic things, aerobic glycolysis, there are few cells which are oxidative and they make use of these oxidative pathways. Now, why these cells are present, what is their metabolic role, why they, what they do to these cells, how they help in proliferation, that is still not well understood. ये अभी पूरी तरह पता नहीं है. That needs to be understood. इसको समझने की भी ज़रूरत है. इन माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को समझने की ज़रूरत है. That's what current research is going on. There is something else, एक और चीज़ भी है, that is called as inverse Warburg effect. So can you tell me what may be inverse Warburg effect? We learnt about reverse Warburg effect. Although the literary meaning इन दोनों का लिटरेरिक मीनिंग एक ही है,
रिवर्स वारबर्ग इफेक्ट और एंटी वारबर्ग इफेक्ट एंड इनवर्स वारबर्ग इफेक्ट कहने में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है, इफेक्ट में डिफरेंस है. कैन एनीवन पॉइंट आउट, क्या कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट कुड बी इनवर्स वारबर्ग इफेक्ट, ये क्या हो सकता है? एनीवन प्लीज. Anyone please. So again, if you have a cancer cell, but this time the cancer cell is present in the vicinity of, ये जो cancer cell है, it is present in fatty environment or environment like adipose tissue. ये एक ऐसे environment में है जहां fat का accumulation ज़्यादा है. So what these cells will do, since there will be lot of nutrients other than glucose, so lot of other nutrients like there may be amino acids, there may be acetyl coenzyme A, they may be directly fed into the cell, वो directly cell के अंदर जा सकते हैं and they can be used for ATP production but not the conventional glycolysis. They don't favor glucose to pyruvate to lactate. That doesn't happen to a great extent. Rather, there is also an extent of gluconeogenesis. बल्कि ये देखा गया है कि कुछ सेल्स में, कैंसर सेल्स जो एडिपोज टिश्यू के आसपास होती हैं, they have gluconeogenesis being favored and lot of nutrients that are required by those cells, they are taken by external environment, बाहर से वो लिए जाते हैं. This is called as inverse Warburg effect. So we talked about Crabtree effect, we talked about Warburg effect, we talked about anti-Warburg or reverse Warburg effect, and we talked about inverse Warburg effect. These are the things that happen during the cancer metabolism. ये चीज़ें हैं जो कैंसर मेटाबॉलिज्म के दौरान होती हैं और ये अक्सर कैंसर के प्रोलिफरेशन को, कैंसर के इफेक्ट को इन्फ्लुएंस करती हैं. सो दैट वाज 100-year-old स्टोरी. 100 साल पहले की बात थी. एंड दिस इज अ बायोकेमिस्ट्री पर्सपेक्टिव. इफ यू आस्क अ मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट, दे विल लुक एट दीज थिंग्स डिफरेंटली. They will not believe this as a cause of cancer. And of course, this may not be cause because there cannot be any sudden change in metabolism. Metabolism में अपने आप ही sudden change नहीं हो जाएगा, right? There must be some factors which are influencing, governing for this shift in metabolism. ये जो shift हो रही है metabolism में towards aerobic glycolysis, towards anabolism and towards the production of these reactive oxygen species and their signalings, ये ऐसा ही नहीं हो जाएगा. इसके पीछे कोई controlling factors होंगे. तो 100 साल पहले जब मॉलिकुलर बायोलॉजी, जीन्स, जीन के फैक्टर्स, इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता था, एट दैट टाइम इट वाज बिलीव्ड, उस टाइम पर यह लगता था कि शायद बायोकेमिस्ट्री या मेटाबॉलिज्म ही है जो कैंसर का कॉज है. कैंसर इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. बट टुडे वी नो, आज हम जानते हैं फ्रॉम द मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट, एक्सपेरिमेंट्स दैट दे हैव डन, that there are a lot of malfunctions in the sustainable genes, sustaining genes, like there are genes which maintain the cell in the normal state called tumor suppressor genes, for example P53. So a lot of genes which are responsible for maintaining the tumors in the suppressed state, they are likely to prevent cancer. Now how do they prevent cancer? Because they have some specific kind of signaling mechanisms which can either control the cell cycle or it can also influence the metabolism. तो ये बात तो शायद आप जानते हैं, या it can be the part of another lecture. A molecular biologist can teach you better that how disruption in the proto-oncogenes, when they get converted into oncogenes, that leads to cancer, how disruption in cell cycle happens, how tumor suppressor genes, when they get deactivated, that can lead to the cancer. That's one thing. But do these genes also influence this metabolism? क्या उन genes के इफेक्ट होने से ये metabolism भी change होता है? This metabolism, metabolic shift in the cancer, is it the cause of cancer or it is the effect of cancer?
Cancer has already been caused by molecular changes, but is it the effect of cancer? क्या ये कैंसर का इफेक्ट है? Let me know that. Please बताइए मुझे. So if you look at the signaling, you would realize that yes, there are plenty of things which are associated with the influence on metabolism as well. कैंसर का जो मेटाबॉलिक शिफ्ट हुआ है, यानी कि जो कैंसर में जो मेटाबॉलिक चेंजेस हुए हैं, they are the cause, they are not the cause, I'm sorry, they are the effect of the gene level changes which we know today, right? In the early days, cancer was thought to be a metabolic disorder. That's why Warburg hypothesis was a cause of cancer. But that's not a cause, that's an effect. ये एक effect है. Cause are these primary genes. You can see here that P53, which is a prominent tumor suppressor gene, right, that can influence these two other genes, PTEN and TGAR, and you can see here that there is a common cascade which you know is regulating the metabolic pathways. एक बहुत ही common cascade है, that is phosphoinositol kinase cascade. So PI3K that influences AKT and that activates mTOR. mTOR can activate another transcription factor called HIF, hypoxia inducible factor. तो ये एक पूरी सीरीज है सिग्नल की जो कैंसर के दौरान इन्फ्लुएंस होती है. लुक एट दिस, P53 जब तक प्रेजेंट है, जब तक वो एक्टिव है, इट इज कीपिंग द P10 एक्टिव एंड P10 इज कीपिंग दिस होल कैस्केड इनहिबिटेड, इसको रोक के रखता है. द मोमेंट दिस इज डिसरप्टेड, वन इन्फ्लुएंस विल बी ऑन दिस आर्म. ये वाला जो फैक्टर है ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, तो ये जो पाथवे आपने रोक के रखा था, होल्ड करके रखा था, ये फास्ट हो जाएगा. एंड ऑल दीज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स AKT, mTOR, HIF1 alpha, they are likely to activate the glycolysis. And I told you the other day in the regulation part, regulation में मैंने आपको बताया था how these transcription factors they can control enzymes either through transcription of those enzymes and translation or through direct covalent modification. So this is going to activate glycolysis. Glycolysis बढ़ेगी, ATP ज़्यादा rapidly produce होगी and lactate will be produced. I'll tell you why lactate will be produced. So that will automatically somewhere inhibit the TCA cycle, right? Not only this, there is also a connection, very good connection between HIF1 alpha and TCA cycle and glycolysis. So HIF1 alpha is also found to be regulated during hypoxic environment other than cancer. But in cancer, hypoxia inducible factor can either activate glycolysis. It can also control the MYC. MYC can then inhibit, then activate the glutaminase reaction. Glutamine का breakdown control कर सकता है MYC gene. MYC can also control the glycolysis. On the other hand, HIF itself can also control two things. Usually, HIF is an activator of pyruvate dehydrogenase kinase. This pyruvate dehydrogenase kinase is inhibitor of pyruvate dehydrogenase. So once pyruvate dehydrogenase is covalently modified, it is phosphorylated, this is inhibited. And that function is done by pyruvate dehydrogenase kinase, which in turn is activated by HIF1, So this HIF1 keeps on activating kinase, and due to the kinase activation, PDH is inhibited. So this can be the molecular cause behind Warburg effect. So did you understand this thing? Apart from logics, there is a molecular reason. The cause of this is not metabolism, cause is molecular perturbations. And these molecular perturbations are influenced by various exogenous factors like carcinogens or external environment, lifestyle problems. So HIF1 alpha activated can stop or can suppress the formation of acetyl coenzyme A, and therefore the TCA cycle would not run depending on this pyruvate. Of course, it can run from glutamine supply. Glutamine can directly make alpha ketoglutarate, and that can still run the TCA cycle to some extent. On the other hand, P53 that keeps on activating SCO2, another factor that activates TCA cycle. But again, if P53 is suppressed,
So this arm will be activated. At the same time, if p53 is suppressed, अगर ये suppress हो जाता है, then this will also suppress this factor and it will also suppress the TCA cycle. So we have two molecular reasons which are defining why TCA cycle will be suppressed in case of cancer. Besides this, HIF also activates lactate dehydrogenase, and since lactate dehydrogenase is activated, that leads to more and more lactate production. So I think this picture makes you clear about why there is a Warburg effect, why there is a metabolic shift in the cancer. There are molecular reasons. इसके पीछे molecular reasons हैं, right? There are a lot of other things like reactive oxygen species, ROS, that is also generated in adjoining cells, nearby cells, that can also cause an activation of HIF1 alpha. So HIF1 alpha can also be activated by reactive oxygen species. So a lot of redox biologists, they also are interested in cancer biology because that's somewhere causing a molecular perturbation, and these molecular perturbations are causing change in metabolism, and that is resulting in phenotype of cancer. I hope that makes you understand cancer metabolism to some extent. कुछ आपको थोड़ा समझ आया होगा जो मैं communicate करना चाहता था. But as I told you, this is not still well understood. अगर ये इतना अच्छे से समझ में आ गया था, 100 साल पहले हमको पता था कि मेटाबॉलिज्म जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है कैंसर में, तो क्यों ना फिर लोगों ने मेटाबॉलिज्म को टारगेट करके दवाइयाँ बना ली? क्यों ना उन्होंने ऐसे इनहिबिटर्स बना लिए जो ग्लूकोज का इन्फ्लक्स रोक सकते हो, लैक्टेट का आउटफ्लक्स रोक सकते हो, ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट कर सकते हो? क्यों नहीं ऐसी दवाइयाँ बना ली गई और क्यों नहीं वो कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाने लगी? 100 साल हो चुके हैं इस बात को हुए. But still we don't have a metabolic drug particularly for cancer. We have other kind of drugs. We have other kind of therapies which either work on nucleotide biosynthesis pathways. We inhibit mostly nucleotide biosynthesis like methotrexate and other drugs which inhibit the nucleotide biosynthesis. But we don't target metabolism because it is not well understood. ये अभी तक अच्छे से समझा ही नहीं गया. But still there have been attempts. कुछ attempts किए थे लोगों ने. Some of them failed. Like one of the molecule that you might be knowing, deoxyglucose. आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है 2-deoxyglucose. सुना होगा इसके बारे में आपने. Some of the labs have developed this as anti-COVID drug, anti-corona. There is nothing very special about its antiviral activity. I would say this has been known from long time. बहुत पहले टाइम से this has been known as a potential anti-cancer drug, क्योंकि deoxyglucose जब आप लेंगे, so it will work as an inhibitor of glucose hexose isomerase. जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है, उसके लिए एनालॉग होता है, एंड दैट एक्ट एज अ इनहिबिटर. सो यू कैन इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर एंजाइम, दिस पर्टिकुलर इनहिबिटर. ग्लूकोज को लेकर, डीऑक्सीजनेटेड ग्लूकोज को लेकर आप क्या कर सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट कर सकते हैं. दैट्स वेल नोन फ्रॉम लॉन्ग टाइम. और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, 2008 में दिस underwent clinical trial, and that clinical trial for the cancer failed because of very less pronounced effects on cancer. So this drug has already been failed for the cancer therapy. Cancer के लिए ये drug fail हो चुकी है. और भी नुकसान है इस बात के. It is resembling mannose. So since it resembles mannose, it is also capable of inhibiting or suppressing the glycosylation of proteins. Proteins के glycosylation को भी affect करता है. Right? So these are the things which are already known about 2-deoxyglucose, but of course some of the labs which have done work, they might be having some scientific basis behind that, and that might be effective against COVID as per their claims. But this is a well-known anti-cancer drug which failed in the clinical trials. You can also use brominated pyruvate. So 3-bromine pyruvic acid, that was also tested because it can also act as an analog of pyruvate, and that can inhibit the glycolysis. Similarly, some other compounds like alpha cyanohydroxycinnamic acid, ACAA, this is an MCT inhibitor. Do you remember what MCT was? MCT was a channel monocarboxylate transporter that was being used for lactate transport by cancer cells. लैक्टेट को बाहर भेजने के लिए वो काम करते हैं, MCT4 in particular.
So a high affinity MCT, the inhibitor, was also being used, and I think this is AstraZeneca is trying the clinical trials for this. It is under clinical trials for cancer therapy. So MCT transporters inhibitor can also be used so that you can block the lactate inside the cancer cells and you can prevent the development of the microenvironment for the cancer. That was yet another thing which was tested, and it is still in the trial. Then another thing, dichloroacetic acid. So this DCA is known to be a potential inhibitor of PDK, and you know what PDK can do. PDK is actually inhibiting the pyruvate dehydrogenase. So if you inhibit PDK, you are actually activating PDH, and if you are activating PDH, you are making that TCA cycle to resume, to go fast. So if you resume the TCA cycle, the shift in metabolism that has happened in the cancer from TCA cycle oxidative phosphorylation to glycolytic, that can be restored, and it is likely that metabolism dependent phenotype of cancer could be prohibited or could be prevented. So my dear friends, that was something which I thought I must share with you related to cancer in this metabolism series. I hope you enjoyed. मुझे लगता है कि आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा. आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं. एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड इन कैंसर बायोलॉजी, it can be a basic initial primer for understanding the cancer metabolism. I hope you will enjoy this. Please do share with your friends, and if you have any comments, any questions, you can share with me here in the comment box. I would love to answer them, and if not today, then we will try to make answers in coming days.